हेलो एवरीवन। हम लोग हाउ टू ड्रॉ आइज़ के सीरीज़ में आज जानेंगे कि हम लोग मिथिला पेंटिंग में कैसे आई ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आइज़ जैसा बना हुआ या बनाते हुए बच्चे देखते हैं या कोई भी देखते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हम सिमिलर ही लेके जा सकते हैं या फिर आइज़ ही तो है, जैसा आइज़ होता है वैसा ही बना देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। फोक आर्ट होता है मिथिला पेंटिंग। तो मिथिला पेंटिंग का आइज़ भी डिफरेंट होते हैं। इमोशंस आपको कुछ भी समझाने हों तो आपको उसी टेक्निक से ड्रॉ करना होगा जैसे मिथिला पेंटिंग में ड्राइंग आइज़ का होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम इस तरीके से ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इनकम्प्लीट लाइन कहीं कहीं छोड़ते हुए नहीं, जैसे हम नॉर्मली ड्राइंग में बना देते हैं, लेकिन हम इस तरीके से कंप्लीट करते हुए बना सकते हैं। सिंपल। नंबर 2, अच्छा आपको पता है ये जो लाइनिंग हमने दो लाइन के बीच में फिलिंग के लिए कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कचनी। और जो हम लोग फिलिंग वर्क करते हैं दैट मीन्स जहाँ पे हम कलर फिल कर देते हैं उसको बोलते हैं भरनी इन मिथिला। I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do.